Everyone, am I audible? Am I audible, everyone? Okay. Okay, so let us start. So today we'll be starting off with logistic regression and we'll also be doing PCA. Okay. So logistic is, let me just start with that. I'm not shared the file yet. And also I've shared a mail for everyone. उसमें आपके 4 data sets हैं. So one is cab rides, other is for subscription and with credit cards and loan default and like that. तो एक पे आपका EDA वाला है, cab rides वाला, and the rest 3 data sets are for making machine learning models. So just do hands-on them and see what kind of problems do you face and till what point you are able to do. Did everyone receive that mail? Last week, the day which I've gone, I've shared on to that day. Maybe on Wednesday, I think I've done. So has everyone received that mail? Along with the problem set now, sir, given. Okay. So did you also do knife-based implementation? Hanji Nishkarsh? Pipeline. Pipeline में there is nothing. आपने एक pipeline. Okay, I'll share the code जिसमें pipeline होगा. There is nothing much. उसमें आपने back to back चीजें देनी है. उसमें there is no nothing extra की जो समझाना पड़े. But yeah, I'll share the code. ठीक है? You just have to, जैसे हम classify define करते, you have to define a pipeline object, and into that object you have to give the classifier and जो भी आपने functions देने हैं, you just have to give all those things. Okay. Have you done any problem statement like stock prediction? Where? Where you're talking about, Kanishka, like kahan pe stock prediction? Into the classes or where you're talking about? I not using ML algorithms. I don't have it using ML algorithms. What do you usme what is different into that? Like usme are you facing any kind of challenge into that stock price prediction? EDA mandatory नहीं होता कनिष्का. EDA is not something which is mandatory. कि हमेशा मिलेगा ही मिलेगा या sometimes data explore में जैसे stock price करना है आपने, you see the trend कि what is the trend, you see the trend, what is the trend about the data, आपका generally stock price का जो value रहती है क्या रहती है, shouldn't be done with arena. No, not mandatory. You can solve it using that also. A priori is similar to association's rule, Rajat. Association rule is a part of unsupervised learning, तो उसके लिए यूज होता है. ECLAT is a different algorithm, but I've never used it. तो बहुत सारे algorithm हैं. तो ECLAT is one of them, and a priori is for that same. It is association rule.
association की rule के लिए, there is one very famous finding. It was there that beer, diaper, Walmart. So this is that about association rule. If a person went to Walmart and if he's asking for diapers, then likely, Rajat, I'm packed up. I'll see. Yes, I will have to. But meanwhile, if agar aapko, if you're getting it from somewhere else, then try your own part as well. I've not got time to do it. You have the code, Aditya? Yeah, please share with everyone. Mera okay. Results are not good. शेयर कर देना रजत. I'll try, but again मैंने I think मैं 2 week से बोल रही हूँ आपको ये चीज. तो I'm packed up with things. लेमन टर्म्स में सी एसोसिएशन रूल्स दे आर सिंपल रूल्स. जैसे भी मैंने आपको बियर डाई पे प्रॉब्लम बताया, सी व्हेन यू जस्ट गो थ्रू इट आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा दैट इनटू दिस आपकी चीजें रिलेटेड है. दैट इफ अ पर्सन वेंट टू वॉलमार्ट एंड ही परचेज्ड बियर, देन लाइकलीहुड वाज कि अगर उसने बियर खरीदी है तो डायपर भी खरीदेगा. सो रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स आर फाइंड आउट. रूल्स लगाए जाते हैं कि इफ दिस इज गोइंग टू हैपन तो अदर दूसरी चीज की भी पॉसिबिलिटी है दैट इट विल आल्सो हैपन. एक बार ये गो थ्रू करके देखना, इट विल बी क्लियर टू यू. एक सेकेंड, लेट मी हैव अ गुड लिंक. Just this is what this is the register. This is our, I don't know our. Okay. आज आज I'll try to. Meanwhile किसी और के पास नहीं है. Don't you have any other association rule code? Anyone apart from Aditya? And one more thing, जो Aditya you were talking about, Arima stock price prediction can be done using Arima, लेकिन then into that case you have to consider only two things. फिर आपने date consider करना पड़ेगा, and let's say if you want to predict the open price, close price, high, low, तो वो दो features जाएंगे. And when अगर आपको उसको regression problem लेना है, then take all the features, open, close, low, high, volume traded, and so all those things. तो वो सारी चीजें consider होंगी. Arima के लिए सिर्फ फिर आपने date and the value to be predicted. तो उस हिसाब से you will have to see. Yeah, it can be done. It can be done. So accurate prediction, see, वो it's all about the parameters you take. So I've not done with Arima. I've not done with Arima at any time. So I don't know what results it give you. Is there any particular site from where I can learn all such types? No such type, Rajat. Google. 10 जगह पढ़ोगे तब जाके you just get to know, because at a certain site a person might be telling you wrong information. वो अपने हिसाब से बता रहे, maybe that is not completely correct. So just don't read from one place, visit couple of blogs and things, and then just come to a conclusion. Just don't follow one thing. I'll go trading. Just Google. I don't have it with me, Kanishka. मुझे भी search ही करना पड़ेगा. I don't have it with me. What is quantopian you're talking about, Aditya?
For stock prediction, is it an algorithm or some tool or software or I don't know. I don't have any knowledge about quantopian. Algorithm trading for stock price. Kind of algorithm. Is it an algorithm? This is some sort of tool, I guess. Yeah, because they're all registered users create an account, maybe page or tool for financial trading prediction. Yeah. Do they do it themselves? Yeah, they ask you to code into. अगर आपने use किया है तो. You can write algorithm like we write in Spider and give all the stock values. तो वो तो हम Jupyter में भी कर सकते हैं. Then why do we use this Quantopian tool? Yeah, मतलब does it only provide the platform और ये खुद से backend में put up the analysis and everything? Okay, just explore. I'll explore it, what it is about. It's open. Okay. So it's a platform which allows you to specifically for finance problems. Okay. Maybe Kanishka, you can take help from here. Maybe this is all regarding finances. So maybe it might help you. Yeah, this is the link which you have provided, Aditya. Yeah, मैंने वही लिंक खोला है जो आपने मुझे दिया था विंडो में. Okay. So आज के लिए let us start with logistic regression or okay, let us start with logistic regression. Yeah, वो मैंने sign up नहीं कर रखा है इस वजह से I'm not a member, इसलिए it's not such. I have to sign up in order to have access to it. Yeah, we'll also explore this one after the class.
let's see what is into it. Okay, so coming back to logistic regression here. ठीक है, logistic regression is for your classification algorithms. ठीक है, and see what does it use in the backend. जो आपकी linear regression की equation होती है, same equation is worked upon into logistic regression as well. वही equation ली जाती है, लेकिन उस equation को हम किस में put up कर देते हैं, we put that equation into sigmoid function. ठीक है, so this is for predicting your binary classes. classification problem है, belongs to supervised learning algorithm. ठीक है, so it always computes the probability of a event, let's say, and the cutoff probability is 0.5. तो अगर cutoff probability is more than 0.5, then the class belongs to the positive class, and if it is less than 0.5, then it will belong to the negative class. तो यही हमारी linear regression की भी equation थी. This is your y-intercept, this is your coefficient value or slope for your x1 variable, slope or coefficient for your x2, and this is for xn. So this equation is only used, तो पहले ये तो calculate होगा ही होगा, and after that we put this equation. Okay, just a second. So x1 and your x2 and xn are your exploratory जो हमारी features होते हैं. These are those variables beta 1, beta n, ये आपको already पता है. Coefficients. Now since we are solving a logistic regression, so they are the coefficients or slope regarding to the logistic regression problem. So initially this equation will be calculated, and then this equation is put up into the sigmoid function. So what you are able to show in here is the sigmoid function. So this is your sigmoid function, या इसको logic model भी बोल देते हैं. ठीक है, आइडियल हमारी लीनियर मॉडल की ये इक्वेशन होती है. दिस इज द ग्राफ फॉर बेस्ट फिट लाइन, ऐसा ऐसा कुछ होता है. सो व्हेन यू पुट अप इनटू द इक्वेशन, इट विल ऑलवेज गिव यू वैल्यू बिटवीन 0 and 1. ठीक है, एंड p refers to your probability. तो what has happened here, this represents your exponential and to the negative. तो जो ये आपकी इक्वेशन है, what is the equation here, minus इसके लिए यहाँ पे it's only shown for one variable, that is beta naught, that is y intercept plus slope of x variable. तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ क्या किस में पुट अप किया, to the power with a negative sign. तो this is your sigmoid function. So sigmoid is a probabilistic function कि इसमें जो भी कोई वैल्यू आप दोगे, क्योंकि इससे y आपका क्या निकल के आता है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, let's say it comes out to be 23 या कोई भी नंबर निकल के आता है, right? And then when we put up into the power of e with a negative sign onto it, and when we apply this formula, it will always range from 0 to 1. ठीक है, so this, because of this reason हमारा जो logistic model develop होता है, because of this equation 0 से 1 के बीच में value देगा, and logistic regression into the backend will have a cutoff threshold of 0.5. तो by default वो उसमें set होती है कि if the value, or that is if the p value is more than 0.5, तो it will go towards the positive class. तो जो आपका output होगा, that will be a positive class, and if the value is less than 0.5, the output will be a negative class. ठीक है, so the output given by this function is always a probability कि ये class, what is, let's say if it is 0.5 and 0.9, तो 0.9 आपका more than 0.5 है, then that is output of a positive class. जैसे हमने predict proba में भी देखा था, similar kind of output is given here. ठीक है, उसमें हमने फंक्शन निकाला था, प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन यूज किया था. यहाँ पे जो इसका इक्वेशन है, इक्वेशन का ही आउटपुट आपका प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है. So this is sigmoid function here, as I've already told you, it will always put your values between 0 and 1. तो sigmoid function का ग्राफ हमेशा S-shaped ग्राफ होता है. ठीक है, so it does not go 0, it is always flat like this. It does not go 0. So this is your 0 value and this is your threshold here. 0.5 is your threshold. यहाँ से ऊपर सारी values 1 and below this all values comes out to be 0, and this is the graph for your logistic regression. And linear regression के लिए हमारा जो ये blue line वाला है, this is the graph for linear regression where you have this equation of slope and y-intercept multiplied with x. इसमें दो तीन चीजें होती हैं, just a second. So as I told you, p is your output probability. जो आपका p है is output probability, that is probability of an event to occur.
ठीक है। तो इनटू दिस वी विल मैप दिस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। नाउ इट इज टेकन हाउ दिस थिंग इज डिराइव्ड, विल सी दिस हाउ दिस p is derived here. So let me, so उस इक्वेशन से पहले व्हाट इज टेकन आउट, वी जस्ट टेक आउट द ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो क्या होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, इट इज द प्रोबेबिलिटी, हमारा जनरल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर डिवाइडेड बाय टोटल इंस्टांसेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इनिशियली ऑड्स रेशियो इज कैलकुलेटेड। ऑड्स रेशियो मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट अ क्लास इज ब्लू will happen and the probability that class is not blue will happen. तो odds ratio is not probability, क्योंकि probability में total outcome आपका denominator में आता है और particular probability आपकी न्यूमरेटर में आती है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास ब्लू इज टू हैपन इज लेट्स से 0.4, ठीक है, 0.4 हमारे चांसेस है कि ये क्लास अकर होगी, देन डिवाइडेड बाय व्हाट विल कम आउट टू बी 0.60 कि कितना क्या प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्लास विल नॉट हैपन। wherein in case of probability this is odds ratio that a class blue will occur, and in case इसकी probability क्या होता है 0.4 डिवाइडेड बाय जो टोटल मेरी और भी क्लासेस होती है डिवाइडेड बाय 1 इन टोटल, तो प्रोबेबिलिटी वुड हैव बीन 0.40 लेकिन ऑड्स रेशियो क्या निकल के आई 2/3, डिवाइड करोगे फर्दर यू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू। सो ऑड्स रेशियो में यू विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू अकर। तो यहाँ पे that is only calculated here. How that formula has come up, that sigmoid function, we calculate the odd ratio. Odd ratio में जो probability है, this is the probability of an event to occur, this is not to occur. Then what we do is, so p हमारा क्या निकल के आया, odds ratio p is equals to p by 1 minus p. So this was event to occur and this was non-event to occur. So in case logarithm has been taken out, so log p and this formula comes out to be this one. तो जब इसका लॉगरिथम ले लेते हैं इट कम एंड दिस कम्स आउट टू बी योर लॉजिक फॉर्मूला। नाउ लॉगरिथम ऑफ p हैज टेकन आउट एंड दिस इज योर ऑड्स रेशियो एंड इसको इक्वल एंड दिस इज गिवन इक्वलेंट टू, सो दिस इज द इक्वेशन बिहाइंड द लॉजिस्टिक इक्वेशन। तो इन वैल्यूज का लॉगरिथम लेके इट इज पुट अप इक्वल टू दैट जो हमारी लीनियर रिग्रेशन मॉडल का आउटपुट आता है, दैट y वैल्यू जो इक्वेशन हमारी लीनियर रिग्रेशन की, इट इज कंपेयर टू दैट बिकॉज लीनियर रिग्रेशन गिव्स यू आउटपुट एज अ कॉन्टिन्यूस डेटा। Just to map it into the probability 0 and 1, we take this log value and we put it here. लेकिन इसका क्या होगा, what is going to happen here, this will always range from 0 से infinity, क्योंकि आप लॉगरिथम लोगे अगर बड़ी वैल्यू है तो लॉग भी उसका बड़ा होगा, इट विल नेवर रेंज फ्रॉम 0 से लेके 1, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी विल बी डूइंग द एक्सपोनेंशियल पार्ट लेटर ऑन। सो इनिशियली व्हाट इज डन, odds ratio is calculated, we take the log value of that odds ratio, and then what we do is we take the exponential part because this ki range is 0 to infinity, we have to have the probability between 0 and 1, so that is why exponential is taken here. So jab aap exponential le loge it will just simple come out to be p1 minus p and this will go into the exponential part, right? So this equation comes out to be like this in here when you see at the bottom here. So your equation turns out to be this one, ठीक है। एंड नाउ सिंस इट इज p by 1 minus p, just a second, equals to, then this equation is further solved. ये आपका पहले p ऊपर था ये नीचे था, this equation is further solved. You know take multiplicative inverse, you add one both sides and then further this equation gets solved out to be, and then what we get is here simply जब हमारा p आ जाएगा, this is the equation coming up to be जो हमारा sigmoid function है कि you know how that logistic model has came up to be. So the very first step is we have calculated the log odds ratio, odd ratio का हमने logarithm लिया and just to change that range so that it does not come out from 0 to infinity, we have taken the exponential part and solved that equation. Initially it was p by 1 minus p, we have taken the inverse and did the addition so that we just had the p, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, probability चाहिए, we don't want this complete equation, ठीक है, we don't want this complete equation, so that is why this one has been come up here, addition किया, equation को solve किया, and when you again do इसका inverse कर दोगे, you just get a p value. So
इक्वेशन फर्दर सॉल्व, जस्ट डूइंग द, आपने एड अप किया डिनोमिनेटर्स को, यू हैव कम अप विद द सेम डिनोमिनेटर एंड दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी स्कोर। तो ये आपका क्या निकल के आया, दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, इसको यू जस्ट कम अप विद 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा नॉट एंड बीटा 1 x2, जो भी आपकी इक्वेशन है, दैट कम्स आउट टू बी योर सिग्मॉइड फंक्शन। इट इज, इसको जनरली हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड x इज ऑल दिस इक्वेशन ऑफ योर्स। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज x एंड दिस कम्स आउट टू बी योर सिग्मॉइड फंक्शन, जो आपकी वैल्यूज को मैप कर देगा बिटवीन 0 and 1। सो इसमें आपका लीनियर रिग्रेशन वाला ही काम होगा, स्लोप कैलकुलेट होगा, इंटरसेप्ट कैलकुलेट होगा, एंड देन दे आर पुट अप इनटू the exponential part, so that equation is put up onto the exponential part। then जो आपकी values हैं, जो कि linear regression ने क्या दी, regular values plot की, regular values output दी, then because of this sigmoid function और logit function भी बोल देते हैं इसको, your values are mapped between 0 and 1 because of this particular function। ठीक है, and it will give you output in the form of probability and threshold। I've already told you कि threshold होता है लॉजिस्टिक में, कि अगर इस फंक्शन के आउटपुट से जो भी आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा, अगर उसका स्कोर 0.5 से ज्यादा है, वो कैटेगराइज होगा फर्स्ट क्लास में, दैट इज पॉजिटिव क्लास में। अगर उसका थ्रेशोल्ड 0.5 से कम है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड टू द नेगेटिव क्लास। ठीक है, so there is nothing much into it, it's all डेरिवेशन है उस इक्वेशन की, नथिंग मच, क्योंकि सारी चीज आपकी इस इक्वेशन से निकल के आती है, एंड दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। उसको बस हम लॉजिक मॉडल में डाल देते हैं, एंड देन द वैल्यू इज बीइंग ट्रांसफॉर्म टू 0 and 1। इज इट क्लियर या नहीं समझ में आया? नॉट मच इनटू दिस एल्गोरिथम। ठीक है, तो आई बी टेकिंग दिस, इसके लिए विल टेक द टाइटैनिक डेटा सेट। ठीक है, एंड ऑन टू दैट डेटा सेट विल बी अप्लाइंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड टू एंड कोड इज देयर। तो उसमें भी यू विल नॉट फाइंड नथिंग न्यू, इट्स ऑलरेडी, just have a look onto it and tell me if you have any confusion at any point। see, these are the necessary imports। ठीक है, टाइटैनिक डेटा सेट, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ द टाइटैनिक डेटा सेट। कोई है जिसको नहीं अवेयर है उसका? वेयर टू यूज दिस, मतलब राकेश, जब भी आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका, मैंने आपको डेटा सेट्स दिए हैं कि डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, वेदर नो द पर्सन विल सब्सक्राइब टू द ऑफर और नॉट, सो दैट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। So on to those problem, you can call logistic regression algorithm, you can call decision tree, you can call KNN, you can call SVM, and you can call random forest। तो classification algorithms के लिए logistic regression is one of the algorithm to go with, क्योंकि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऑल्दो नाम में रिग्रेशन आता है पीछे, लेकिन स्टिल इट गिव्स यू द क्लासिफिकेशन। नो, आई हैव नॉट शेयर्ड द डॉक्यूमेंट एंड द नोटबुक कनिष्का। ठीक है, so into this, so have you worked on to Titanic data set before? Into R, I guess you have done, so you might be aware of the process, that how do you, if given into Python, can you, okay, let's see, what I'll do is, let me share the data। do you have the data set? I think आपने काम किया था, आपके पास data set भी होगा। तो I want you to come to make an end-to-end process। can you make dummies for male, female? एंड इसमें आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं, इसमें आपकी कुछ मिसिंग वैल्यूज, डू एन ईडीए पार्ट। सो आई थिंक ईडीए भी आप, यू हैव टू जस्ट मेक ग्राफ्स एंड यू हैव टू सी कितनी नल वैल्यूज है, कितनी मिसिंग है, यू हैव टू लुक फॉर आउटलायर्स। एंड जैसे कैबिन में नैन वैल्यूज, एंड व्हेन यू एक्सप्लोर इनटू कैबिन, मेजर ऑफ योर डेटा इज मिसिंग। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि अगर 40% ऑफ योर डेटा इज मिसिंग, तो यू विल ड्रॉप दैट कॉलम, उस कॉलम में आप डेटा ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे कैबिन हैज मोर देन 40, ऑलमोस्ट ऑल द वैल्यूज आर मिसिंग, तो you will straight away drop the cabin column। एज के लिए will definitely do a missing value treatment, लेकिन will drop the cabin column। ठीक है,
एम्बार्कमेंट में भी आई थिंक देयर इज वन मिसिंग वैल्यू हियर. तो जस्ट एक्सप्लोर द डेटा, कितने मिसिंग है, उसका डमी वेरिएबल बनाना वो हमने किया है ऑलरेडी. हाउ डू यू मेक डमी वेरिएबल्स एंड हाउ डू यू bring those dummies into your original data and do the replacement of age. Sorry, is it? Yeah. Do the missing value replacement for age. So how can you derive what logic can be used if you want to treat missing values for age? कैसे कैसे कर सकते हैं? Can anyone tell me? No, there is no such hard and fast rule. Any logic can be taken up कि age की missing को कैसे treat कर सकते हैं basis on the given features. Cabin को consider ही नहीं करेंगे because it's majorly आपका nan है. तो how can you derive the simple mean value, Aditya? Mean of age, सीधा सीधा mean. Mean as per the class, ठीक है. Mean as per the class can be taken up. Siblings पे भी नहीं फर्क करेगा. As per the fair also it can be taken up, but yeah, P class, your class and fair are representing the same thing. If your class is a higher class, then fair will be definitely one. If it is tier 3 class, then fair is automatically. So yeah, you can go with, क्योंकि दोनों same चीज ही रेफर कर रही है. Yeah, you can take mean for every P class, or you can similarly take the fair accordingly. If you don't want to go for P class, you can go take with fair also. The basis on the fair, you can look कि maximum value occurring क्या है या mean value क्या है. Survive does not have to do. So actually, survival has also to do something, not that much, but for the gender, survival is important, but for age also it was important. Also, you can do the segregation part. And that can be done, आप जैसे आप P class से treat करोगे, fair से treat करोगे, तो how it can be done using an if else condition, right? कि if the class is 1, तो आपका जो भी age column है उसका mean value से replace हो जाए. If the P class is 2, तो आपकी जो age की mean value है उससे treat हो जाए. If the P class is 3, तो जो आपकी age की value है mean value, उससे आपका nan value हट जाए. This way you're going to do. आपने maybe you have done it also into R. Okay, so let us. Okay. Sampling pipeline. Oh, oh yes, we are left with sampling also. Yeah, sampling thing we have not done. एक सेकेंड, हमारा क्या क्या रहता है? Let me just write down. Pipelining also, okay. What else are lasso ridge? I know that is left out. PCA is also left out. What else are we left with? Sampling pipeline, lasso ridge. Do you have any other thing जो मेरे दिमाग से skip हो रखे हैं, we have yet to cover apart from these 4?
हाँ जी, do you have any topic जो we have to cover, जो रहता है as per the syllabus part? Am I audible? तो प्लीज जवाब भी दे दो. Is anything else left? As per me, these 4 things are left. Sampling at Kanishka has asked. Yeah, Aditya, आपने पूछा. This we have to cover. Anything else which we have to cover? जो as per me मैंने मेरे recording की कर लिया, लेकिन you have not done into the class. We are not into the class. Okay. Okay. Okay, now coming back to our data set. Okay. So we are using, so EDMA, it's all about, making graphs and trying to find out what things are there. So you are using, specifically आपने using P class into consideration, Kanishka. Okay, ठीक है, ठीक है. भेज दीजिए, send the code. कनिष्का, मुझे पाइथन आती है, समझ जाऊंगी. Can we take? अच्छा, आपने R में किया है. Is it for R? What is this? R नहीं आती कनिष्का मुझे. I thought you have given for Python. R I don't know. कोई नहीं, I have a code written into Python. अच्छा, वो फिर आपने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि आपने R में लिखा, आपने लिखा कि you have done the treatment part. आपने लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की. तभी मैंने पाइथन के लिए बोला था. नहीं, R I don't know R. I'll share the Python one. Python में I've done using if else. ओके, तो ये सब ईडी वाला पार्ट है. यू ऑल आर अवेयर ऑफ द ग्राफ्स. Yeah, I'm thinking to learn R. We have outliers also. So outlier treatment is to be done. Yes, बिल्कुल Kanishka, I would love to. Why do you have only for P? Why do you have only P class is equals to 3? कहाँ? अच्छा, R कोड में. Yeah, this one. 29. Or simply you could say yeah, similar. So you have defined this function, and जैसे हम lambda function लगाते हैं, similarly you can use and apply. Yeah, almost the same.
बिकॉज टाइटैनिक डेटा सेट आपका बहुत कॉमन है एंड यू फाइंड इट, आपको बहुत चीजें ऑनलाइन मिल जाती है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें ज्यादा. These are some pre-cooked data sets you find. बट या जिस जैसे आप लेमडा फंक्शन लगाते हो, यू कैन जस्ट सिंपल यूज डॉट अप्लाई एंड अपना कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यू कैन यूज एंड अप्लाई एंड देन पुट अप हियर, जस्ट स्पेसिफाई द कॉलम. अदरवाइज अगर हम रेगुलर, या basic one, very basic one, simple function define can using apply, it has been done here. Just one thing in here. I think I have something for pipeline because logistic regression से code आपको already पता है and you are aware of the concepts. So I don't think इसमें ना कुछ बचता है. Just to, because you know how to evaluate the model, you know how to create a model end to end. Let me look. I have something for pipeline part. Just give me a second. Mm-mm. Although this is an old code, and this is also on to the Titanic dataset. Yes, embarked and yeah. Let me execute it. हाँ जी, I will share this. Let just a second. Let me execute it, and then because ये बहुत पहले का बना हुआ है, I so maybe no libraries have also been updated. No, no, not as per. कोई नहीं, I will have to come up. इसमें this is not up to date. This code is not up to date. Into what you do in here, pipeline में क्या होता है जनरली, you call the pipeline function from sklearn, ठीक है, and then जैसे हम classify define, जैसे grid search हमने किया था, we defined grid search cv, then उसमें हमने बताया कि ये मेरा classifier है, ये मेरे parameters है, ये मेरा cv की value है. तो similar सा है, you import the pipeline part and then you create an object pipeline and उसमें you pass on the list of values. तो पहला you have to define tuple की form में कि जो आपका जैसे कोई आपने फंक्शन बनाया मिसिंग वैल्यूज के लिए, दैट दिस इज माय मिसिंग वैल्यू पार्ट, दिस इज माय क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, सो इट हैज पैरामीटर्स. तो हम सीधा पैरामीटर्स यहाँ पास ऑन कर देते हैं एंड देन this is now this will what it will do, it will put that function जो हमारा मिसिंग वैल्यूज का था, although this is not up to date, इसमें चेंजेस होंगे काफी, बट ये पुराना है. तो what is happening here, imputer and आपका algorithm लिया यहाँ पे and then this complete pipeline has been fed into a grid search cv. Now you see, जब हम algorithm define करते हैं grid search cv, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, pipeline, क्योंकि pipeline में मैं अलग से बार बार जाके treat नहीं कर रही, I'm making a pipeline कि पहले data treat हो जाए using this function, then it should go to this class, ये फिर classifier ये वाला आना चाहिए, and then I'm defining my parameter grid because I want to use grid search cv. तो ग्रिड सर्च सीवी में हमने एल्गोरिथम की जगह क्या दिया, पाइपलाइन. तो पाइपलाइन जब हम देंगे तो ये वाला क्लासिफायर उठ जाएगा और उस क्लासिफायर उठने से पहले डेटा विल बी क्लीन्ड अप बाय दिस वे एंड दीज आर योर पैरामीटर्स ग्रिड. तो पाइपलाइन इज नथिंग स्पेसिफिक, you just can give multiple values all together and you can call them in one go. तो बार बार वाली चीज हट जाती है. So let me improve this one.
हालांकि इट इज टेकन फ्रॉम LMS ऑफ Ematicus, तो यहाँ वहाँ पे I've just downloaded a couple of days ago, तो इसमें भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो या I'll tomorrow I'll come up with a pipeline code. I'll improve this one and then we'll come up, I'll explain, but it's not that difficult, ठीक है। Okay. Okay, let me also give you, because see, isme I don't think there is nothing to cover into this one. I'll just share the notebook. You already are aware of the concepts. Categorical banana, then making the dummy variable, doing the train test split, dropping the survived colon and calling the logistic regression. Linear model family से ही आपका logistic होगा. Yes, you can make a pipeline. You can. उसमें वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी ना, जस्ट नो आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एंड आफ्टर दैट, तो प्रोसेस फ्लो हो जाता है उससे, ठीक है। नहीं, मैं वही मैं I'll have to improve that code, then tomorrow I'll come with that pipeline code, and hopefully जो हमारा sampling techniques है वो भी I'll discuss tomorrow. Okay. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ है नहीं ऐसा, बाकी कोडिंग पार्ट आपको ऑलरेडी पता ही है। कोडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई क्वेश्चन किसी का एट एनी पॉइंट, नॉट इनटू जस्ट LR, कोई और एल्गोरिथमिक आपको कोई कंफ्यूजन हो, स्टेप्स में कहीं पे कंफ्यूजन हो, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन, basic major things have been covered. Similarly is our PCA algorithm. PCA में भी PCA में आपके बैकएंड में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट होते हैं, तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, have we done PCA by the way? Have we done into the class? We have not done, no. Grid search, हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, निष्कर्ष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रिड सर्च में क्या होता है मैं यही बता देती हूँ। सी ग्रिड सर्च में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करने हैं किसी एल्गोरिथम के लिए, जैसे रैंडम फॉरेस्ट के लिए हमें एन एस्टिमेटर चेक करना है, डेप्थ चेक करनी है, स्प्लिट चेक करने हैं, तो आइडियली हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एन एस्टिमेट एक बार 100 लेके चेक करूंगी, फिर 1000, फिर 500, तो आई हैव टू डू इट मैनुअली, मुझे हर बार चेंज करना पड़ेगा, हर बार से फिटिंग, प्रिडिक्शन एंड ट्रेनिंग पार्ट करना पड़ेगा। सो ग्रिड सर्च हम जब यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट कि आपके बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स कौन से हैं, तो ग्रिड सर्च आपको क्या अलाउ करता है, इनटू ग्रिड सर्च पहले यू हैव टू टेल कि आपने कौन सा एल्गोरिथम लेना है, बीट रिग्रेशन और बीट क्लासिफायर, किस एल्गोरिथम पे आपने मल्टीपल आइटरेशन करके यू वांट टू चेक दैट एल्गोरिथम। आफ्टर दैट ये जो पैरामीटर ग्रिड है इसमें आपके सेट ऑफ पैरामीटर्स जाएंगे जो आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज नॉट दिस वाज रिलेटेड टू द इम्प्यूटर पार्ट, आई विल टेल दिस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिगार्डिंग टू दिस क्लासिफायर मुझे ना मैक्सिमम डेप्थ चेक करनी है, मुझे मैक्सिमम फीचर्स चेक करने हैं, मुझे एन एस्टिमेटर्स चेक करने हैं, तो जो भी मेरे इस एल्गोरिथम के जो हम कॉलिंग है रैंडम फॉरेस्ट, जो मैं यहाँ पे कॉल करूंगी, जो भी इस एल्गोरिथम के पैरामीटर्स मुझे टेस्ट करने हैं वो मैं अपने पैरामीटर ग्रिड में एज अ डिक्शनरी पास ऑन कराऊंगी, ठीक है। तो what grid search will do, it will pick this algorithm, it will pick these parameters one by one, and एक बार ये आपका क्लासिफायर में लेट्स से 0.5 मैक्सिमम डेप्थ लेगा, मैक्सिमम डेप्थ 5 लेगा, एंड लेट्स से एन एस्टिमेटर्स मैंने 200 दिए, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका मॉडल को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, बिकॉज once we have defined a grid search CV, हम क्या करते हैं उसको फिट करते हैं ट्रेनिंग डेटा पे, राइट। तो आपका पहले कॉम्बिनेशन 0.5 एंड 5 डेप्थ एंड 200 डिसीजन ट्रीज, तो इसके साथ इट विल ट्रेन योर डेटा, इट विल इवैल्यूएट, क्योंकि हमने क्रॉस वैलिडेशन में लगाए तो क्रॉस वैलिडेशन वाली प्रोसेस भी बैकएंड में होगी, ठीक है। इट विल इवैल्यूएट योर मॉडल, देन 0.5 को नन के साथ, नन इज नथिंग एक्चुअली हियर, और लेट्स से मेरा सेकंड नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज है 250,
तो 0.5 को 250 डिसीजन ट्रीज के साथ ट्रेन करेगा आपके डेटा पे एंड इट विल इवेलुएट द रिजल्ट। सिमिलरली जब आपका वैल्यू आएगी मैक्सिमम फीचर की 1, तो 1 को 0.5 और 200 डिसीजन ट्रीज के साथ वो कॉम्बिनेशन लेगा, इट विल ट्रेन योर मॉडल अगेन एंड मतलब जितने भी आप पैरामीटर्स दोगे ना उनका 1-on-1 इट विल टेक ऑल दोस पैरामीटर्स 1 by 1 और आपका यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट बिकॉज यू हैव टेकन क्रॉस वैलिडेशन वो टेस्टिंग डेटा इसी में से जनरेट होगा। तो इट विल कैलकुलेट द स्कोर एंड देन एट द वेरी एंड इट विल गिव यू कि आपके बेस्ट पैरामीटर्स कौन से थे, क्योंकि हमें व्हाट डिड वी वांटेड टू फाइंड कि मैं इसमें यहाँ पे क्या पैरामीटर लूँ सो दैट माय रिजल्ट्स आर बेस्ट। तो जो हमारा मैनुअल पार्ट था ये फिट करने का, कैलकुलेटिंग द रनिंग द कोड अगेन एंड अगेन आवरसेल्फ, तो दैट इज टेकन केयर बाय द ग्रिड सर्च सीवी। यू जस्ट आप इसमें बस आप एल्गोरिथम बता दोगे, यू विल टेल कि ये मुझे पैरामीटर्स चेक करने हैं, क्रॉस वैलिडेशन आपका टू गेट अ मोर गुड मॉडल एंड इट विल ऑटोमेटिकली डू द फिटिंग पार्ट विद ऑल दीज कॉम्बिनेशन 0.5 5 एंड कुछ और भी होता विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड देन एट द वेरी एंड इट विल टेल यू कि जो आपका बेस्ट स्कोर आया है, जो आपने पैरामीटर दिए वो ये स्कोर था एंड ये वाले पैरामीटर्स आपके बेस्ट पैरामीटर्स रहे जिसको लेके यू हैव गॉटन द बेस्ट स्कोर। तो वो रिपीटेशन वाला where is the classifier role working in this, you did not see this is एक सेकेंड ये कोड है नहीं ठीक, एक सेकेंड लेट मी ओपन द कोड। जैसे हमने एसवीए में किया था ग्रिड सर्च सीवी राइट, एसवीए में ट्राइड फॉर मल्टीपल वैल्यूज, तो जब हम अपना एल्गोरिथम देते हैं उसमें हम पहले बताते तो हैं कि आई वांट टू ट्राई फॉर दीज एल्गोरिथम, तो आई वांट टू ट्राई एस सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर एंड मुझे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर पे ये सब पैरामीटर्स को टेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स का लिस्ट दे दिया, डिक्शनरी दे दिया एंड देन इट विल टेस्ट 1 by 1, पहले ये कॉम्बिनेशन लेगा 0.1 इसके साथ लेगा, इसके साथ लेगा, फिर 0.1 इसके साथ लेगा, इसके साथ, तो 1-on-1 कॉम्बिनेशन लेगा एंड किस पे इंप्लीमेंट होगा सब, इसको लेके एसवीसी को लेके, और किस पे इंप्लीमेंट करेंगे, विल इंप्लीमेंट इट ऑन टू आर ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि यहाँ पे आप पहले बताते हो ना कि यू वांट टू ट्राई फॉर व्हाट एल्गोरिथम, ये मैंडेटरी है, यू हैव टू टेल द एल्गोरिथम फर्स्ट देन ही आपने पैरामीटर्स बताने हैं followed by the cross validation and verbosity and then you will train your model। अब जैसे मेरे पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे 0.001, नाउ यू विल सी कि जब हमारी ट्रेनिंग हो रही है इसे 0.1 को किसके साथ टेस्ट किया, 100 के साथ, when you scroll down onto this one you will find another combination। अब 0.01 को किसके साथ टेस्ट किया, 0.1 के साथ, तो जो भी वैल्यूज थी and furthermore when you scroll down अब 0.01 के साथ किसके साथ चेक किया, 0.001, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 000 गामा के साथ भी चेक किया हुआ है एंड रिस्पेक्टिवली क्रॉस वैलिडेशन की वजह से यू आर गेटिंग द स्कोर आल्सो। व्हेन यू इवन स्क्रॉल डाउन कॉस्ट क्या आ गई 1 विद गामा वैल्यू ऑफ 0.1, व्हेन यू इवन स्क्रॉल डाउन तो जो हमारी मल्टीपल वैल्यूज थी एक बार कॉस्ट 1, तो इन सब के इस कॉस्ट को इन सब के साथ चेक किया, कॉस्ट 1 को इन सब के साथ चेक किया, कॉस्ट 10 को इन सब के साथ चेक किया, क्रॉस वैलिडेशन से रिजल्ट्स कैलकुलेट किए कि क्या रिजल्ट आ रहा है जो ये स्कोर, एंड एग्रीगेशन करके क्योंकि हमने कितने लिए यहाँ पे फोल्ड्स 10 फोल्ड्स लिए, तो उस 10 फोल्ड्स पे जो मेरा बेस्ट एग्रीगेटेड रिजल्ट होगा दैट विल गिव आउट टू बी माय बेस्ट स्कोर या इज इट शोइंग स्टेप्स बिकॉज ऑफ यस वर्बोसिटी, आपका जो ये आपको ये बैकएंड में प्रोसेस दिख रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ वर्बोसिटी पैरामीटर, ये नहीं दोगे तो ये आपको ये कुछ विजिबल नहीं होगा। ठीक है निष्कर्ष, क्लियर टू एवरीवन, सॉरी निष्कर्ष आपको क्लियर हुआ, बाकी को क्लियर था। CV10 क्रॉस वैलिडेशन है, आपके जो डेटा को है 10 फोल्ड्स में डिवाइड किया जाता है, क्रॉस वैलिडेशन। ओके
Okay, let me also give you an idea about PCA, because इसमें भी no problem. इसमें भी because into this also much backend में eigen values है. Did you had your stats class? आपका statistics होता है syllabus में eigen values, eigen vectors, although not needed, but if somebody is really interested into the maths part. तो PCA में भी आपका eigen values और eigen vectors calculate होते हैं, तो that is all statistical formulas होता है उनका. तो अच्छा ये आप या सो PCA में वो बैकएंड में वही निकलते हैं कनिष्का, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. दैट इज व्हाट इज कैलकुलेटेड इन या मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, यस. तो PCA वर्क्स ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपका वेरिएंस को लुक आफ्टर करता है, स्प्रेड देखता है, तो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट PCA वर्क्स. ठीक है, तो PCA आपका डीकंपोजिशन एल्गोरिथम है. डीकम्पोजी आपने आपने आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है ना कनिष्का? Masters in mathematics, yes. Okay, so principal PCA is your decomposition algorithm. Decomposition as in PCA हम क्यों use करते हैं? When you have very huge number of features, let's say you have 60 to 70 features or 80 to 90 features, and in that case you don't want to know, you just don't want to take all those features. 70-80 features you can't afford, just you have to write it manually or things like that. So what at times, although इसको ज़्यादातर we don't use it because it does not make much impact, क्योंकि इसको यूज करने से पहले मुझे स्केलिंग करनी पड़ती है, इसको यूज करने से पहले मुझे आउटलायर्स हटाने पड़ते हैं, इसको यूज करने से पहले मुझे डेटा क्लीन करना पड़ता है. तो ऑल द स्टेप्स आर डन प्रायर टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफ PCA. तो और इसका एक क्या है, लेट्स से यू हैव 80 फीचर्स इनटू योर ओरिजिनल डेटा, एंड व्हेन यू वांट कि आप PCA लगा रहे हो, क्योंकि PCA क्या डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम, आप बोलोगे आई जस्ट वांट 2 फीचर्स, तो ये क्या करेगा, इट विल डू द कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एंड इन 80 फीचर्स को 2 फीचर्स में मैप कर देगा. तो लेट्स से 80 में पहले आपकी मल्टीपल इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन थी, एज था, जेंडर था, क्लास थी, सैलरी थी, इनकम था, स्कोर था, समथिंग सम इन्फॉर्मेशन लाइक दिस. एंड जो आपके 2 नए फीचर जनरेट होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज. आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें एज की वैल्यू कौन सी है, सैलरी कौन सी है, इनकम स्कोर क्या है, सिविल स्कोर क्या है, XYZ. इट इज जस्ट उन पे प्रोसेसिंग होके यू कम अप विद वन वैल्यू. तो आपका जो स्टैंड अलोन डेटा होता है, देन यू जस्ट कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट डेटा वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन, किसका क्या वेटेज लिया, किसका क्या वेटेज नहीं लिया. व्हाट वी डू इज वी जस्ट टेल कि आपको कितने कंपोनेंट्स चाहिए. कंपोनेंट्स से मतलब you want to break your data into how many components, 2 components, 3 components, 4 components. अगर आप 4 components बना दोगे, then your 80 features will be broken into 4. broken नहीं बोलेंगे, combined together by the process of eigen values, eigen vectors, covariance, multiple पीछे उसमें mathematics formulas लगते हैं. Yes, it will compressed into 4. It will be compressed into 4, and definitely जो compress होके data आएगा, you will not be able to come back to this data. ठीक है, तो जनरली पीपल डोंट यूज PCA, ऑल्दो एल्गोरिथम है डिकम्पोजिशन में, बट रियलिस्टिक सिनेरियोज में भी अगर आपका कोई फीचर इंपॉर्टेंट है, मिसिंग वैल्यू करे, चाहे 80 फीचर हो, आपको 80 फीचर्स की, एंड इफ यू फाइंड दे आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू द मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट फॉर देम. वो करना पड़ेगा. PCA विल नॉट सॉल्व दैट टास्क. PCA बस उनको कंप्रेस कर देगा, नथिंग मोर देन दैट. तो दैट इज वाई ये इसलिए यूज नहीं होता, क्योंकि वंस यू हैव डन द आउटलायर ट्रीटमेंट पार्ट, once you have done the missing value treatment part, data cleaning आपने कर लिया, then just point क्या है, just take all those algorithms instead of taking PCA, so that you can अगर आपने PCA करके 2 components में आ गए, you cannot also tweak it also, no? कि ये feature हटाना है, ये feature लेना है, you can that thing is also gone. या variance पे कि या will cover that, it will depend on to that how much spread your data is, कौन सा will see that thing. It is useful only for decomposition. When you find, तभी मैंने बोला people don't generally use it, तो ये नहीं यूज होता, because it does not create much impact. ज्यादा फर्क नहीं आता आपके एल्गोरिथम के रिजल्ट में. Even though when you want to tweak the parameters, then also ये आपकी वो चीज भी आपके हाथ से चली जाती है, because they are compressed, तो you cannot tweak the parameters also. तो जो है उसी पे फिर काम करते हैं, तो तभी PCA ज्यादातर यूज नहीं होता. बट या अगेन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डिमेंशनलिटी रिडक्शन है,
तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम जो कि अनसुपरवाइज है क्योंकि इसमें कोई टारगेट नहीं होता। तो व्हाट एज यू गेव द टर्मिनोलॉजी कंप्रेस, तो क्या करेगा, कोई टारगेट है नहीं, मैंने अपना सेट ऑफ फीचर्स दे दिया, उनको कंप्रेस करके 2 फीचर्स में बना दिया। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज, क्योंकि ना टारगेट है ना कोई प्रिडिक्शन होती, बस डेटा की स्केलिंग या इट इज जस्ट कम अप इनटू 2 principal components basis क्या देखेंगे, will cover that. So let's say for example what it will do in here, let me just come to the very bottom. For example if this is your data, ठीक है, these are your features, आपके बहुत सारे features है, if you wanted to cover onto this data, so PCA will look for the concept of variance कि आपका data किस direction में ज्यादा spread है. So it will always the जो इसमें आपके components होते हैं, your PC1 comes out to be a principal component 1, PC2 comes out to be a principal component 2. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हमेशा वो होगा जिस डायरेक्शन में आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा. सो इफ दिस वाज माय डेटा सेट एंड इसमें लेट्स यू कैन टॉक अबाउट n डायमेंशंस हियर, तो x y z x1 y1, बिकॉज आपका डेटा क्या होता है, अगर 2D में होता तो x y, 3D में होगा तो x y z, 4D में होगा तो x y z1 समथिंग लाइक दैट. तो लेट्स से दिस इज योर डेटा पॉइंट एंड आपने इनको कंप्रेस करके जस्ट हैव टू कम अप विद 2 डायमेंशन. तो PCA विल लुक फॉर द वेरिएंस कि किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएंस है. एक सेकेंड, let me give you theory थोड़ा सा तो that आप able to relate it. So it tries to preserve the data variance, मतलब अगर मेरा x axis की डायरेक्शन में मेरा डेटा स्प्रेड है, it will try to preserve that thing. तो ये बेसिकली सबसे पहले वेरिएंस को लुक आफ्टर करेगा कि किस what is the spread of data into which direction the spread is, and then basis on that your components are created. Let's say if the relationship between variance and information here, the larger the variance, it means the larger the dispersion of data. ये तो सीधी सीधी बात है. And as per that your PCA will come out to be. So your principal components, they provide a new access to your data. New access, I'll tell you how. And they try to find out the best angle so that your data is captured. आपकी information भी lose ना हो, but it is also able to capture the data. So दो principal, just a second, this is some, let's say if this was my data here, if I wanted to capture it, तो principal component क्या करेगा, as I told you, look for the variance part. So this is the line which can capture the best variance of my data. अगर if I make it like this, if I make it like this or any direction like this, तो my variance is not captured. Variance मतलब सबसे ज्यादा data points किस direction में capture होंगे. When you draw, when you come up with a line like this, when you come up with a component like this, तो इससे जितने भी information it is getting aligned with up all, right, सबके पास जा रहा, although there are at a distance, लेकिन still it is able to capture all these data points, right. And this comes out to be a principal component 1 क्योंकि आपका variance का direction क्या था, it was this direction. तो जिस direction में आपका data ज्यादा spread होगा, that will come out to be a principal component 1. And then if you are saying principal component 2, now still see इस direction का data तो capture हो गया, लेकिन we have something still left onto this part, right. तो when I'm talking about कि I want 2 components, तो then my principal, जो आपके 2 component होंगे, principal components 2, 3, 4 और they will be always orthogonal to each other. वो हमेशा 90 degree angle पे होंगे, ठीक है. तो let's say इस direction में the maximum variance of my data was captured into this direction. Now I want 2 components. तो मेरा what can be the second component? Will it be like this? Will it be like this? तो generally what happens is the second component is always orthogonal, 90 degree पे होगा. So आपका इस direction में the variation has been captured and this comes out to be your PC2. आपका x axis पे capture हो गया. Now onto y axis your variations have been captured. Let's say I want to have a principal component 3, then maybe this comes out to be my principal component 3. लेकिन it will be always an orthogonal क्योंकि आपका डेटा क्या है, n dimensional. तो although यहाँ पे आपका ग्राफ ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा, but this will be orthogonal, 90 डिग्री बनेगा हमेशा. जितने भी principal components होंगे, they will be always orthogonal to each other. तो ये आपका 90, if I wanted to have principal component 4, तो maybe into this direction. That is, it will always look for the variance part कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर हो, उसके बाद कहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा कैप्चर हो रहा है, ऑन टू दिस वन, उसके बाद कहाँ पे कैप्चर होगा, मे बी दिस वन और दिस वन हियर. तो तभी वो डिकम्पोजिशन करेगा, बिकॉज लेट्स से
if your data is spread in so much in it, so it will just not take care of everything, क्योंकि decomposition कराना है, but still it has to keep the integrity part, वो data को lose नहीं कर सकते, so that is why it goes for the variance part. So if we project this data onto y-axis, let's say क्योंकि you know it because decomposition करता है, compressing करता है, तो here हमारा data ideally इसमें था, and now if you are projected into y-axis, it is not able to capture it. तो तभी हम multiple components के साथ जाते, we just don't go for one component. So this is when you project it onto y-axis, and this comes out to be when you project it onto x-axis. तो आपका डेटा किस तरह से अच्छे से कैप्चर हुआ when you do it onto x-axis, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका वेरिएंस सबसे ज्यादा था. And then this comes out to be your PC1, and जो आपका y-axis वाला है, that comes out to be your PC2. तो x-axis is the most variance, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस था, this comes out to be your PC3, PC2, and ऐसे ही आपके multiple principal components can come out to be. ये एक पैरामीटर है when you call the algorithm कि आपको कितने components चाहिए. You want to have 2 components, then it will look for 2 components जो आपका maximum variance capture करेंगे. If you say 3, तो 3 components को look after करेगा. If you say 4, then 4 को look after करेगा. ठीक है. The mandatory step for this one is that you have to do scaling before it. आपने PCA लगाने से पहले scaling is important. You have to do the data cleaning part, and scaling also is to be done. Scaling क्यों important है? क्योंकि जो ज्यादा बड़ी values होंगी, let's say if a value is into number of dependents and if a value is into salary, तो salary का variance ज्यादा होगा compared to the number of dependents, so it will likely capture that kind of data, so that you know the algorithm, while compressing part or while the decomposition part is not biased towards anything, तो इसलिए scaling करना जरूरी है. And scaling can be done using logarithm values or could be done using you know standard scalar, min max scalar, या mean value minus कर सकते हो, or you can come up with any other approaches as well if you have. So scaling is important so that everything comes out to be onto the same level, so that there is no biasness into your data, कि आपका जो ranges है, they are almost all into the same range, and आपका जो variance है, it is captured equally for all the data points. ठीक है. So इसमें concept होता है आपका direction and magnitude का. So principal components have both direction and magnitude. Direction represent करेगा कि along which axis your data is mostly spread out, कि आपका वेरिएंस किस डायरेक्शन में है. एंड मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करता है कि यू नो एक सेकेंड, ओके. सो इसमें आपकी दो चीजें होती हैं, इट वन इज ए डायरेक्शन एंड वन इज ए मैग्नीट्यूड. सो डायरेक्शन आपका क्या स्पेसिफाई करेगा कि किस डायरेक्शन में आपका वेरिएंस है. देन मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करेगा कि लेट्स से अगर मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे था, तो इसमें इतना इनटू दिस PC1 how much of the data variance has been captured. Okay. See, I told you दो चीजें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन तो ये हो गया, PC1 का डायरेक्शन ये हो गया बिकॉज आपका वेरिएंस इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है. PC2 का डायरेक्शन ये हो गया क्योंकि आपका सेकंड सबसे ज्यादा वेरिएंस किस पॉइंट पे है, इस पे. दिस कम्स आउट टू बी योर PC2 बिकॉज मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स कैन बी कैप्चर्ड दिस वे, एंड देन सेकंड जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स है कैन बी कैप्चर्ड दिस वे, इसलिए आपका ये PC21 एंड दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल. ठीक है. दिस वाज अबाउट डायरेक्शन पार्ट. नाउ देन वी हैव इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड आपका बताएगा कि कितना आपका जो वेरिएंस है कितना कैप्चर हो पाया. लेट्स से दिस इज ओनली एबल टू कैप्चर 70% ऑफ द वेरिएंस. 100% तो होगा नहीं. 100% हुआ तो सेकंड कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है, राइट. तो all of the variance, that is all of the data points, because अभी still you see still these data points are left out जो हमारे कैप्चर नहीं हुए प्रिंसिपल कंपोनेंट से, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 से. सो दैट इज व्हाई मैग्नीट्यूड आपका बताता है कि हाउ मच ऑफ योर वेरिएंस डेटा पॉइंट्स का जो आपका वेरिएंस है, हाउ मच ऑफ दैट वेरिएंस हैज बीन कैप्चर्ड बाय योर प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट 2. तो जब भी आप पीसीए निकालोगे, इफ यू से आई हैव 2 कंपोनेंट्स, यू कैन ऑलवेज चेक कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 ने कितना डेटा कैप्चर किया. इट विल बी ऑलवेज इनटू 0.7, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, वी हैव अ फंक्शन. सो लेट्स से इसने मेरा 0.70 डेटा कैप्चर किया, so 70% of the variance from the data has been captured by principal component 1. Let's say इसने मेरा 10% variance capture किया, और let's say not even 10, let's say 25% of the variation has been captured by principal component 2. Now still I have that 5% left, क्योंकि total 100% variation. Now maybe I can come up with principal component 3.
which will capture the last 0.5%. तो जो ये वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स योर मैग्नीट्यूड, कि आपका कितना डेटा का वेरिएंस कैप्चर हुआ. सो तभी हम बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट हैज टू थिंग्स, डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट बना, एंड उसका मैग्नीट्यूड की एक जो कंपोनेंट आपका बना है PC1 2 3, हाउ मच ऑफ द डेटा वाज कैप्चर्ड बाय दैट प्रिंसिपल कंपोनेंट. ठीक है. सो डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएंस, डायरेक्शन ऑफ द डेटा स्प्रेड, एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू कि दिस मच ऑफ द डेटा वाज कैप्चर्ड. बाकी आपका 30% बच गया या 20% बच गया या जो भी, ये वी गेट द वैल्यूज, वी हैव प्री डिफाइंड फंक्शंस फ्रॉम PCA, वी कॉल दोस फंक्शंस एंड वी गेट दीज वैल्यूज कि आपका जो डेटा था इतना कैप्चर हुआ बाय PC1, बाय PC2 एंड बाय PC3 एंड सो ऑन. तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्लियर है हर किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? Okay, now after that, so yeah, this is the function जिसको बोलते हैं explained variance ratio. So we call this function from PCA and this will give you results like this. तो हम PCA जब and after the scaling part, when you apply PCA and then you call this function, जैसे k means में क्या था, dot inertia जो distance देता था, तो इसमें आपका function का नाम है explained variance ratio. So it will return the variance caused, captured by each of the principal component. So आपका जो सबसे टॉप पे होगा, that will be a principal component one. Now it says 0.72% has been data by PC1, 0.23 by PC2, 0.3303 by PC3 and 0.004 by PC4. So major of your data has been captured by two components. So this function will tell you the magnitude part. So always, let's say we look for, let's say अगर मेरा principal component 1.72 कर पाया, and we look for these value की basis on these we identify कि do we need more principal components or not. If my data is not well captured, let's say if I just go with only one principal component, तो सिर्फ एक PC1 से मेरा इतना ही data capture हुआ, I cannot lose the remaining one, so definitely I need a PC2. So if only taking these two, let's say some percentage is still left, let's say it's just 13 here, not 23, let's say it's just 13, then it means I need some more principal components, then I can come up with PC3. Okay, so this tells me ki, how much data you are losing and how much has been captured by your component, how much of your data has been compressed और कितना you can afford to lose. ठीक है, ज़्यादा principal components भी नहीं लेते, but yeah, you always look for these values कि are they good enough, is your data being captured या you're losing too much of your data, and that comes out to be by using explained variance ratio function. ठीक है, so written here PC1 is responsible for the 72% variance, second principal is representing the 23 variance, and collectively we can say कि जो हमारा PC1 and PC2 है उसने कितना परसेंट डेटा को कैप्चर किया, 96% डेटा को. तो here as per this 3 point something data is we are losing if we go with two principal components. So we can take the principal component 3 also if you don't want to lose that data. You just have to specify the number of principal components to be 3 and that is your parameter. And then see, it depends. अगर आपका अगर 96% and 97% है, then just you can go with these values. अगर बहुत ज्यादा, अगर let's say जैसे इस example में बात करें, आपको यहाँ visible है, you see at this point this is not much significant. अगर आपके principal components बहुत minute करके data लेके आ रहे हैं, then there is no point of taking them, because this is a very less capture compared to this was a significant capture, this was a significant capture, this is also not that significant. तो आपके principal components का जो magnitude है वो कम होता चला जाएगा. So you just have to look कि कितना, if you're losing like 7 to 8, then you will not definitely go with that. But yeah, 97-98% of your data is captured, then you can just go with that many components, because taking these many फिर आपके components भी increase हो रहे हैं. Or you can just take and see, फिर आप evaluation करके you also see the result, how well your model has been performed when you work with this compressed data. See, let me show you here. Yeah, as I told you, you have to see the variance captured. आपको देखना पड़ेगा कि कितना डेटा कैप्चर हुआ. अगर let's say
सिर्फ दो components में only 70% of your data is captured, then you will definitely go with third component also, क्योंकि 30% data you cannot afford to lose. अगर third ने भी आपका only 2% या 10% capture किया, still have 20% data to capture, तो we'll have to look कि कितना data capture हुआ, कितना lose हो रहा है. So basis on that you just increase the number of components. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो दिस डेटा सेट इज नॉट बिग इनफ, लेकिन अज्यूमिंग जैसे अगर बड़ी डेटा में एन नंबर ऑफ फीचर्स के साथ भी इट विल वर्क द सेम वे. अज्यूमिंग यहाँ पे मेरे पास 13 फीचर्स हैं एंड आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दीज 13 फीचर्स. So what will I do is just I'll call the PC algorithm and it will transform my data. So what it will do in here, you see, just a second. You see your data has been, मैंने जब कोड को कॉल किया, how much number did I give? I gave that I only wanted to have 2 components. I've called PCA, I've done the fit transform onto my training data, and this is the amount of variance captured. तो मेरा first PCA ने first principal component ने कितना data capture किया? Only 0.42. Second ने कितना capture किया? 0.17. So there is lot of loss in here. So I can definitely increase the number of components here. I can go with PC3 and then I'll see कि जो explained variance ratio जो भी मैंने आपको बताया कि कितना डेटा आपका लूज हो रहा है and how much it is still further able to capture. So basis on this value you will have to see that do you want more or not, because here only around 60% of the data is getting captured. And initially हमारी shape क्या थी? 124 rows and 13 column, and when I just defined कि मुझे कितने components चाहिए, I just want 2 components. Then when I just cross check the shape here, you see the values are now of the shape 124 rows and 2 column. तो आपका जो rescaled data होगा, see initial 30 rows, now this आपकी values हमेशा they'll come out to be on such scale. You cannot tell that what your values are referring to. Although मैंने यहाँ पे display नहीं कराया. कोई नहीं, will execute the code, then I'll give you this complete explain. तो जो आपके 13 features है, they'll just come out to be into 2 columns. ये जो पूरे 13 features हैं, they'll come out to be only in 2 columns because हमने कितने component बताए यहाँ पे? 2 component बताए. So they'll be compressed into 2 columns. ठीक है. So these are the steps which you should follow, and this is an important part. जितना आपका outlier treatment important है, जितना missing value important है, उतना ही PCA के लिए standardization of your data, that is normalization or scaling is important for PCA. I've already told you the reason, so that every variable contributes equally to the analysis of the data set. Set of values will be compressed into PCA components. Set of values matlab, what are you referring to? Features, Nishkarsh? Yes. अगर आपके पास 13 features, let's say if you have 30 features, and आपने बोला मुझे 2 component चाहिए, then these 30 features basis on the variance कि किस direction में सबसे ज़्यादा variance है, basis on the magnitude, it will be decomposed into these 2 features. So will not into the resultant data आपके पास सिर्फ 2 column मिलेंगे. This is PC1 column and this is PC2 column. जो आपके पास initially 30 features थे, they'll be reduced into the PC1 and PC2. ठीक है. So this is the reason I've already told that if there is a large difference between the ranges of the different variables, then they will not dominate over those small values. Let's say value between 0 and 100 will dominate the value between 0 and 1. क्योंकि PCA में क्या देखता है? Variance देखेगा. अगर डेटा का स्प्रेड ज्यादा है, क्योंकि उसका स्केल ज्यादा है, तो it will have a definitely bigger variance. Then it will obviously take more taken care. So इसके लिए we do the scaling part. ठीक है. And categorical features and that dummy variable, missing values, outlier treatment, integer या float values होना, वो तो एक mandatory part है. Data cleaning has to be done.
before scaling, once data cleaning is done, then you do scaling part, and then just what you do is decomposition. तभी it is not generally used क्योंकि सभी process तो हो गया. The only thing left out is just giving the feature names. Okay. Into the backend, when we call a PCA, a covariance matrix is calculated. So this is the formula for covariance. So it will tell you covariance is a measure कि आपके जो दो variables हैं वो it is similar to correlation. Correlation निकालने के लिए covariance निकाली जाती है, लेकिन correlation का अपना एक formula होता है, it has a scale. आपका नेगेटिव में correlation हो सकती है, पॉजिटिव में correlation between -1 to 1. लेकिन covariance does not have a scale. Covariance आपका बस direction बता देगा कि positive है या negative है. it is telling you the same thing कि how two variables gets changed. तो उनका डायरेक्शन बता देगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, लेकिन जो एग्जैक्ट स्केल वाली वैल्यू आती है दैट इज ओनली गिवन बाय कोरिलेशन. तो कोवेरियंस इज सिमिलर टू कोरिलेशन, but it does not have any scale. It is a concept which tells you the direction of the relationship between two features or two variables. ठीक है. So covariance is matrix is calculated and the formulas are taken. So जो भी आपका feature है x minus I mean I'm not covering this how these matrices calculated, how this is done calculation part. Kanishka, if you have something, so with the help of your master's education, if you have something जिसमें already ये सब कर रखा हो process flow, then please share. So ये आपको already पता है, positive है तो they decrease and increase together, negative है तो then they are opposite to each other. Yeah, because in masters you might have done the derivation part as well. Yeah. So difference between covariance and correlation, it can be measured, कि 0.5 correlation है, -0.5 correlation है, but this cannot be measured. It just gives you the direction, positive या negative. That's it. After the covariance matrix, ये covariance वाली values they are used to calculate the eigenvalues and eigenvectors. So eigenvectors of the covariance matrix are, they tell you the direction कि किसमें आपका सबसे ज़्यादा variance है, and eigenvalues tell the magnitude. आपका जो हमने initially पढ़ा कि principal component में दो चीजें होती है, आपका variance, sorry, आपका direction और magnitude. तो direction is taken care by the eigenvectors. So they are actually the direction. So जो आपके eigenvectors होंगे, they tell you कि आपका इस direction में ज़्यादा spread है, and eigenvalues they tell you the amount of variance captured by each principal component. तो इनका अपना अलग फॉर्मूला होता है आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का, आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने का. सो दैट इज होल अ कंप्लीट डिफरेंशिएशन, होल अ डिफरेंट टॉपिक, बहुत बड़ा. बट या they are talking about the same thing, variance, आइगन वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड आपका वैल्यूज बताएगा. So scaling is done, covariance is calculated in the back end, आपके eigen values and eigen vectors निकलते हैं, and then फिर क्या होता है, ranking is done. So basis on the ranking of eigen values and eigen vectors, जो जिसने सबसे ज्यादा variance capture किया, जिसका magnitude सबसे ज्यादा होता है, that comes out to be a principal component. So basis on what ranking, क्योंकि हमें हमारा PC1 कौन सा होता है, ideally हमेशा PC1 is that one which is able to capture maximum of your data. तो जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, दैट इज जिसकी आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज सबसे ज्यादा है, दैट कम्स आउट टू बी अ प्रिंसिपल कंपोनेंट. एंड इनटू द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो एज पर दैट योर कंपोनेंट्स आर आइडेंटिफाइड. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 विल ऑलवेज अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वेरिएंस इन योर डेटा सेट. ठीक है. सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, इट इज एंड ऑल्सो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर आप 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स लोगे तो पांचों के पांचों दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. So without the mathematical part, this is what PCA does. Without the equation solving of covariance of eigenvalues and eigenvectors. ठीक है. So this is simply a decomposition algorithm. By using these concepts, it
maps your data or it compresses your data into the number of dimensions you want. So into the theory part, does anyone have any question? For the derivation part, Kanishka will share the data, share the material. So इसका भी अपना सीधा सीधा process flow है. So what is happening here? I've taken wine data set. You can जो मैंने आपसे data share किया over the mail. How many does any data has more than 40 features into those? जो मैंने आपसे data set share किया online. What is the maximum number of features they have? $35. Into which one, Mohit? Employee वाले में. So try implementing PCA onto that. After data, आप regular ML algorithm भी लगाना, and using those algorithm do the prediction. उसमें आपका data cleaning और pre-processing सब हो जाएगा. And then also try implementing PCA with those 35 features. Just try to come up with components. I share the code. Code में ज़्यादा कुछ नहीं. It is all पहले आपका data cleaning वाला process है, which you all are aware of. And then you just have to call this one. Data cleaning करके you have to call the scaling part. So this is important. तो data को scale कर लेना. You all are aware how do we do the scaling part. And once you're done with the scaling part, you just have to call PCA, tell the number of components, and you have to do the fit transform method. So just use the PCA code onto that 35 features wala data and see what is the difference between the results when you use a simple ML algorithm without decomposition and algorithm when you अब इसमें with 70 features. Yeah, you can, Kanishka, yes. See, इसमें आपका process flow होगा. Let me tell you here. जैसे कुछ तो मैंने आपको बता दिया data. And then using your algorithm. So using and इसमें आप जो transform करोगे, you will not take target. You see here, क्योंकि आपने decompose करने के बाद आपने algorithm अभी भी लगाना है. You have to still do the predictions. So you will never transform your y test. आपका जो y वाला data होगा, you will never take that. क्योंकि अगर आपने target को भी decompose कर दिया तो prediction किसका करोगे? Because then you will not be able to tell कि आपका कौन सा feature कहाँ पे है. Because then it will just come out to be one value. तो ऑलवेज जब डिकम्पोजिशन करोगे यूजिंग पीसीए मेथड, ओनली डू इट ऑन टू योर, जैसे हमने किया था ना स्केलिंग में हम करते हैं एक्स पे स्केल करते हैं, अपने फीचर्स पे स्केल करते हैं, वी नेवर डू इट ऑन टू द वाई पार्ट टारगेट. तो सिमिलरली जो आप पीसी से डिकम्पोजिशन करोगे, ऑलवेज डू इट ऑन टू योर फीचर्स ओनली, क्योंकि आपने डिकम्पोजिशन करने के बाद यू हैव टू कॉल एन एमएल एल्गोरिथम एंड देन डू द प्रोडक्शन पार्ट. अब जो आपका ट्रेनिंग डेटा वो क्या होगा, that decomposed data जो आपने PCA से जो आपका आउटपुट आया, you will be giving this as your feature into the algorithm and इसके respective you will give what, your y test. So let's say this comes out to be x train PCA after doing PCA, and this is your regular x train. And when you use ML algorithm, so what you will do is you will use this x train PCA and your y test, sorry y train. ठीक है, आप इन दोनों को यूज करके you will do the prediction part.
एंड जो आपने डिकम्पोजिशन, क्योंकि अगर आपने एल्गोरिथम आपने 80 फीचर्स को लेके सिर्फ 2 फीचर बनाए हैं, देन द सेम हैज टू बी डन ऑन टू एक्स टेस्ट ऑल्सो. तो यू हैव टू डू द, अगर आपने, क्योंकि फिट, नाउ सी टू थिंग्स आर डन हियर. हमने ट्रेनिंग पे क्या किया, फिट ट्रांसफॉर्म. तो फिट ट्रांसफॉर्म में हमने पहले क्या किया, ट्रेनिंग हैज बीन डन, आपका जो डेटा कंप्रेस हुआ by the fitting part and then it is transformed. लेकिन you don't want to fit your testing data because ये आपका किसके लिए, this is for evaluation part. ठीक है, so only fit transform will happen onto your training data, you will not do it onto test part. टेस्ट पे आप सिर्फ क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे. बिकॉज फिट करने से क्या हो रहा है, जैसे आपका जो डेटा का जो लेंथ है, आपकी जो वैल्यूज है, दे आर ऑल्सो गेटिंग स्टोर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, right? आपका algorithm में, so only the transformation part has to be done onto the x test. x test पे आप fit transform नहीं करोगे, onto the transform part, and then you will use this transform part. So evaluation के लिए you use what, जो आपका x test pca होगा, जो आपने decompose करके और जो आपने transform करके, you will use that along with your y test. So इस पे prediction करोगे आप, and then you will compare these predictions. ठीक है, then you compare with y test. तो आपने, you will have to keep the y train and y test same, but then x train is in scalar form and y train is not. Don't we have, no, you will never change the y train, क्योंकि as I told you, अगर आपके 80 फीचर्स थे पहले, if you have, let's say आपके ये सभी फीचर्स हैं, यहाँ पे 13 फीचर्स है, एंड ये कंप्रेस होके कितने में बन जाएंगे, 2. देन विल यू एबल टू टेल कि ये फीचर इन दो में, इस दो में कहाँ पे है, ये वाला फीचर इस दो में कहाँ पे है. एंड इफ यू ऑल्सो हैव योर y ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस, तो इट विल जस्ट कम आउट टू बी 2. तो आप प्रिडिक्शन के लिए कैसे बताओगे कि ये वाला कॉलम इसमें से y ये है, यू कैन नॉट टेल दैट थिंग, बिकॉज वो कंप्रेस हो गया, वो डिकम्पोज होके एक सिंपल 2 फीचर्स में बन गया. does not matter. Scalar आपका, your y test will be always kept aside. Your y जो आपका target होगा, it will be always kept aside. आप जो transformations करोगे, it will always happen onto your training data. आपके 80 features 2 में decompose हो गए, but still they are capturing the variance part. जो उनका essence था, they are still looking for that. उनको इन्होंने capture किया है, and using that essence, it will do the prediction for y. तो what it has to do with y? जो x में जो 80 फीचर बता रहे थे मुझे, अब वही चीज, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज अभी 2 फीचर बता रहे हैं, राइट? एंड यूजिंग दोस फीचर्स आई विल हैव टू डू द प्रेडिक्शन 5, जो जैसे हम 80 को यूज करके y की प्रेडिक्शन कर रहे थे, नाउ यूजिंग दिस डिकम्पोज्ड फीचर्स आई एम डूइंग द प्रेडिक्शन हियर. तो यू विल नॉट चेंज y विल बी ऑलवेज प्रिजर्व्ड. सिर्फ x पे आप x पे आप फिट ट्रांसफॉर्म करोगे, x को डिकम्पोज करोगे, एंड देन यूजिंग, तभी मैंने यहाँ पे प्रोसेस फ्लो क्लियर किया, सो दैट वंस यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड. तो डेटा प्री प्रोसेसिंग आपका x पे होगा, कंप्लीट x पे, स्केलिंग भी आपका x पे होगा, स्केलिंग भी आपका y पे नहीं होगा, क्योंकि यू नेवर स्केल योर टारगेट. यू टारगेट को आप एज इट इज रखते हो. जो फिट ट्रांसफॉर्म करोगे पीसीए पे, दैट विल बी आल्सो डन ऑन टू x ट्रेन, एंड ट्रांसफॉर्म only what, transform only your x test, it will result to what, x test pca. And using this x train pca and y train, you will train your algorithm, and using this transformed x test pca and y, इस पे predictions आएंगे, and then you compare these predictions with your y test. So this is the process flow you have to follow. pca का काम है बस decompose करना, उसके अलावा डिकम्पोज करने के बाद आपने एमएल एल्गोरिथम लगाना है, एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, स्केलिंग, वो भी आपने पहले करनी है. ओके, so this is the link. It has 163 columns. This can be happen that result will be affected if we are taking 80 features and making it to, yeah, obviously decomposition, and then there are chances your data will be lost. So this is the link Kanishka had shared.
इसमें आपके बहुत सारे फीचर्स है. एज पर आई कैन सी 163 कॉलम्स. सो ट्राई इम्प्लीमेंटिंग पीसीए ऑन टू दिस एवरीवन. I've told the process flow. I'll share this code with you. आप इसमें necessary changes कर लेना, but you have to stick to this process. Okay? Because decomposition है तो definitely some of your data will be lost. But yeah, तभी I told that PC is not generally used. We don't generally use it because यहाँ तक सारा part हम खुद कर ही लेते हैं. Then you just have to give in the algorithm names. But yeah, if you want to try onto this link जो भी कनिष्का ने share किया, there are ample of columns here. It is in the chat window. Just copy the link. Okay. And then once you transform your data, then you can just cross check कि अगर आपने दो component लिए हैं तो उन्होंने कितना variance को capture किया. And आप अभी जैसे यहाँ पे 50% data capture है, then you can change the value of principal component and then again look for the कितना variance capture है. If you still find less, then increase the number of component. तो basis on the variance की कितना data आपका lose हो रहा है, just tweak the values of number of component. ठीक है. And this one is your graph. So this is simple matplotlib जो हमने यहाँ पे values देखी, explained variance ratio वाली. So these values have been plotted into that graph. So using matplotlib, I'm just plotting these values. So यहाँ पे PC explained variance ratio लिया, multiplied with 100 so that आपका scale 0 से लेके 100 पे आ जाए. Because 0.40 अगर हम plot करेंगे, it will just come up into this range 0.40. वो graph invisible होगा. So इसलिए multiplying with 100 is important so that you are easily able to visualize your graph. ठीक है. Then आपने ये bar graph बनाना है. This is the height of your bar. This is the location की 0. This is 0. This is x is 1. Sorry, x axis पे value 1 and this is 2. So you are telling कि जो आपके bar बनेंगे x axis पे 1 bar you want to be having at 0 value. Another bar you want to have the value at 2. उनकी height. So height कहाँ से आएगी? From this one. तो जितना वेरिएंस कैप्चर होगा 0.4 और 0.15, तो जितना वेरिएंस कैप्चर होगा एज पर दैट देयर हाइट विल बी राइट. टिक लेबल आपका जो कॉलम है PC1 PC2. सो दिस इज माय कॉलम हियर एंड दिस इज योर ग्राफ. सो दिस इज द विजुअलाइजेशन. इसको हम बोल देते हैं स्क्री प्लॉट. सो यूजिंग स्क्री प्लॉट यू विजुअलाइज योर वैल्यूज, बट अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी. अगर आपको you're getting the information from here, if you want to make the graph then use that code. Otherwise उसमें भी हम यही चीज देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे विजुअलाइज की है. Okay. And then what are we doing here? We're just feeding the x train y train जो मेरी इसमें I have not taken the scaled values actually. So इसमें you need to take this one x train 3. X train 3 and y train. Just a second. And prediction में y test x test 3. And then आप वही evaluation classification report and confusion matrix print करोगे and then you get the answer. Do you have any question into the process flow or anything else? Okay. So link Kanishka ने share किया है. Also Kanishka shared that eigen values, eigen vectors वाला your material whenever you have time. ठीक है. So I'll share the code for this one and for logistic and these documents also. So just try implementing PCA onto the data set and see what results do you get. What different results do you get. ठीक है everyone.
So tomorrow we'll do sampling and pipeline and lasso ridge. Let's see if we are able to cover them or not. Okay. So आज के लिए winding up the session and see you tomorrow everyone. Okay. So thank you so much everyone. Thank you and have a good night everyone. Thank you.